स्टूडेंट्स, सॉरी, अभी लास्ट वीडियो में आपने यहाँ तक कवर किया था। तो लेट अस सी, हम ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, वीडियो पॉज हो गई थी। सो लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए बच्चों, यहाँ हम फॉर लूप के थ्रू एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन प्रोवाइड द रेंज ऑफ वैल्यूज। It from the start value, and it may be 0 1 2 3 whatever you want to use it, or from where you want to use your range. And since I know it, since the elements of a list starts with zero indexing, that's why I use here zeroth indexing, right? And it will move up to the n-1। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लेंथ फंक्शन यूज किया है लिस्ट के लिए। इट विल गिव मी द लेंथ ऑफ द लिस्ट, and automatically the function range will read n-1 element। ठीक है, तो यहाँ देखिए, it will start from the zero indexing, zeroth element of the range, and it will come inside the loop। It will assign the value 0 to I, and it will print the print list I। ठीक, and every time the value of range, the value of variable I will increase, because automatically it will get the new value from the range function that started from the value 0, and it will move up to the n-1, total length minus 1, right? So similarly you can see here, you can see on the screen, when the loop will execute, it first of all it will take the value 0 from the range and print the 0th element of the list, and second time it will move increase by 1, and the 1 will assign to the value I, and it will print the first element, or I will say second element of the list, that is indexed by the 1, and third element of the list that is indexed by the 2. So it was the way how we can access the group of elements of a list by using the loop। Okay, I hope clear हुआ होगा आपको। It's not a difficult one। So here is the next topic, how we can perform different operations on a list। So students, you can see on the screen there are 1 2 3 4 5 operations generally that we perform of a list। We find the length of a list, oh sorry, we find the length of a list, concatenate of a list, repeat the element of list, we use the membership operator of the list, and iteration that we already used in our last topic। So what is the meaning of finding the length of a list? Length of the list always return the total number of elements that exist within a list। So in case you can see here len 423, it means that it will give the length of the list, because say it contains 3 elements, that's why it will return the value 3। Concatenate, what is the meaning of concatenate? Concatenate means just adding the just combining the elements of two lists। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है बच्चों दो लिस्ट के आइटम को जोड़ देना। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव टू लिस्ट and I am using the plus operator here। So in Python, plus operator is used to concatenate two lists। So when you will use plus operator, so it will do nothing but it just concatenate the element of first and second list। As you can see on the screen, it will first place the element of first list 4 2 3, and it will append the elements of next list at the end 1 5 6। एक होता है बच्चों रिपीटिशन। इन पाइथन वी कैन रिपीट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। लेट्स सपोज you have an element CS exclamation, and you want to repeat this string 4 times, then you have to multiply this item with number of times। Like let's suppose I want to repeat this item 4 times, then CS exclamation multiply by 4, CS has CS exclamation, it will repeat up to the number of times that you have mentioned। Another one is membership operator। Membership operator do what? In is a membership operator, in and not in, right?
तो यहाँ पर बच्चों ये मेंबरशिप ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई एलिमेंट विद इन अ लिस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं. If it exists within a list, it will give true. Otherwise, it will give false. Like we are testing whether 3 is existing in within the list. Yes, 3 in 4 to 3 yes exist. Of course, we can see here. That's why it is giving us the output as true, right? Another important operation that we perform on the list, that is iteration. Iteration means looping. Through loop, we can iterate the frequency of the loop. We can move the frequency of the loop for a given number of time, for right, or we can say to read the whole elements of a list automatically. We use the loop. ठीक है, हमें बार बार स्टेटमेंट नहीं यूज करनी पड़े. वी कैन यूज द कोड, राइट. तो देखिए एवरी टाइम इट विल एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट and pass it to the variable x and x will print it on the screen. So these were the operations that we can perform on a list. So let's see some more. This is the function. These are the functions that we perform on a list, right? As you can see on the screen, there are variety of functions that we can perform on a list. And to use each and every function, we have to append it with the dot operator, period operator, right? कोई भी आपको फंक्शन यूज करना है, देन यू हैव टू यूज इट विद डॉट ऑपरेटर. लिस्ट का नाम, देन फंक्शन का नाम. तो हियर you can see a variety of operation that we can perform on a list. And the first one is append function. Append function do nothing but it just add the item of a list at the end. Extend यूज होता है मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने के लिए. इंसर्ट यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर आइटम को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करने के लिए. रिमूव फंक्शन इज यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम अ लिस्ट. del function is used to delete an item from the list. Clear to empty all the list. Pop, remove an item at an indefined index value. So these are the different operations: max, minimum, list, length, reverse, काउंट. एलिमेंट्स के काउंट को करके देता है. स्लाइसिंग अ लिस्ट. स्लाइसिंग का मतलब होता है बच्चों सब पार्ट्स ऑफ अ लिस्ट. किसी लिस्ट के सब एलिमेंट्स को एक्सेस करना. आप देख रहे हैं बच्चों, स्लाइसिंग का मतलब होता है स्लाइस, छोटे छोटे पार्ट्स में स्ट्रिंग को एक्सेस करना. जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव लिस्ट विद इंडिया. So you can see we can extract the part of a list by writing the starting and ending position. Like you can give the slicing of a list like this way. स्लाइस करने के लिए आपको रेंज मेंशन करनी होती है. जैसे आप कहते हैं, आप यहाँ पर यू कह रहे हैं कि भाई मैं जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट करूँ अप टू 3-1 डेट इज 2 तक मैं रीड करूँ. बट जैसे जीरोथ एलिमेंट पे है आपका आई और फर्स्ट एलिमेंट पे है एन, सेकेंड एलिमेंट पर है डी, तो इट विल रिटर्न आई एंड डी. और इन लेट अस सी इन द नेक्स्ट वन. इस केस में आपने यू हैव मेंशनड हियर द 3 स्टार्टिंग वैल्यू 3 एंड यू हैव नॉट मेंशन द एंडिंग वैल्यू. तो एंडिंग का मतलब लास्ट टू द लिस्ट जाएगा. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पोजीशन 0 1 2 3 आई से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा आई. एक ये देखिए बच्चों लास्ट वाला जिसमें आपने कोई भी ना स्टार्टिंग दिया है ना एंडिंग, इसमें ये कंप्लीट लिस्ट को रीड कर लेगा. ठीक है, तो बच्चों ये आपका स्लाइसिंग ऑफ अ लिस्ट था. यहाँ तक आप कवर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.